10 lakh people dream to crack JEE, and you're one of them. But dreams demand sacrifice, and yours was no exception. Meals were skipped, but you kept solving. Books were torn, but you kept reading. Pens emptied, but you kept writing. Sleeps were sacrificed, but you kept pushing. Body begged for rest, but mind refused. But you know what? In the end, you will just burn out. You will be dead while being alive. But why? It's because no matter how fast you ride, breaks are important. But what if I told you that there are 3 points, and if you follow these 3 points, you are gonna escape that burnout. और तुम इतने fresh रहोगे पूरे दिन that you won't realize कि तुम इतना पढ़ रहे हो and you're not getting tired at all throughout the day. But मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? वैसे सब कुछ है तो सही, बट बस हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं है मेरे पास. करोगे ना सब्सक्राइब? हाँ? नहीं करोगे? ठीक है, जाओ. कट्टी. तो इस ड्रामा को सबसे पहले थोड़ा साइड में रखते हैं और ये जानते हैं कि यार सबसे पहले ब्रेक लेना ही क्यों है हम. तो सबसे पहले आओ बैठते हैं, आराम से बात करते हैं. हाँ, तो जब भी हम कुछ काम करते हैं और हम अपना माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे अपनी JEE एडवांस JEE मेंस की पढ़ाई, तो उसमें जब हम अपना माइंड इतना यूज़ करते हैं ना, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थॉट्स, लॉट्स ऑफ लूप्स ऑफ थॉट्स दैट आर जनरेटेड इन आवर माइंड. अब इस थॉट से देयर इज अ ह्यूज क्लस्टर दैट्स क्रिएटेड. अब ये क्लस्टर जब बहुत बढ़ जाता है, देन you will experience this burnout. तो मैं इस burnout को तोड़ना है. How will you do that? You will do this by breaking these loops of thoughts. And these 3 points जो मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ, these 3 points will help you to break this cluster and increase your mind की efficiency. क्योंकि जब तुम काम करते हो तो you know your mind की efficiency starts falling as time progresses. So point number 1, take micro breaks. Micro breaks का मतलब ये है कि after every 30 minutes you got to take a break of 30 seconds. It might sound funny. What do you have to do in these 30 seconds? इस 30 second में you just have to stop whatever you're doing and then focus on your breathing. आंखें बंद करो, focus on the inhalation, focus on the exhalation. जैसे एक breathe inhale कर रहे हो, count 1, exhale कर रहे हो, count 2. ऐसे करते करते do up till 30 और 40 and over time तुम्हें ये realize होगा कि तुम कितना फ्रेश फील कर रहे हो आफ्टर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी. एंड यू विल रियलाइज कि यार यू हैव कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम जो भी हो रहा है. भले ही तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जो सॉल्व नहीं हो पा रही, भले ही तुम टफ कुछ कर रहे हो जो यू नॉट एबल टू सॉल्व. After this particular activity of taking a break of 30 seconds, you will feel that freshness within you, and trust me, this is a proven technique. I have used this throughout my JEE preparation. JEE advance के exam के दिन भी मैंने ये use किया, and then I was like, इतना जो stress था, it got bursted within 30 seconds. Now एक time में नहीं आएगा, you got to practice this throughout. But trust me, this is a very powerful technique. And one caution in mind: do not watch phone or anything in these 30 seconds. JEE means में अच्छे रिजल्ट के लिए it is very important for you to have the right kind of test series. And so to help you with this, Mathongo is here with one of India's finest JEE mains test series. And the test analysis report is so advanced that तुम आराम से improve करोगे. And also if you purchase the test series from the link in my description, you get a 45% off. Also एक और बात, अगर आपको 99 percentile plus आता है, then तुम्हारा सारा पैसा मैथॉन तुम्हें रिफंड कर देगा. सो गाइज, हरी अप एंड परचेज दिस टेस्ट सीरीज बिकॉज टाइम नहीं है बॉस, फटाफट अभी इम्प्रूवमेंट लाना है. पॉइंट नंबर 2, टेक इनफ मिनी ब्रेक्स. नाउ मिनी ब्रेक क्या होता है? मिनी ब्रेक एक ऐसी एक्टिविटी है जो तुम ऑन अ डेली बेसिस परफॉर्म करोगे फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स. इट शुड बी नॉन अकेडमिक, इट शुड बी कंप्लीटली नॉन टेक्निकल. मतलब अगर तुम्हें जिमिंग करने में इंटरेस्ट है, इफ यू लाइक टू प्ले अ स्पोर्ट, इफ यू आर let's say if you like cooking, तो तुम कुछ cook करो every day for at least 30 minutes. If you are a spiritual person, then meditation, chanting, that's another powerful way of unwinding yourself for at least 30 minutes throughout the day. Trust me, this is a very essential activity. इधर तुम 30 minutes का break लोगे, that unwinds your mind completely from the stress of your studies. So keep in mind, find any such activity which suits you. Comment section में लिखो any particular activity which you want to perform every day for 30 minutes. Now don't say कि you like watching reels. तो भाई मैं मतलब 30 minutes reels देखूंगा, मूवी देखूंगा. No, you should be away from your gadgets. You should be away from your phone. क्योंकि अगर आप phone देखोगे, ये करोगे, you are again building up thoughts and तुम्हारा mind और भारी हो जाएगा.
The idea is to unwind yourself, not to wind yourself by reels. So comment down and let me know. Bhai log, the third point is to sleep. See, you might solve a problem in a day, you might not solve. तुम्हें हो सकता है अच्छे मार्क्स आ रहे हो, अच्छे मार्क्स नहीं भी आ रहे होंगे, हो सकता है you got a bad percentile, हो सकता है you're not understanding something, but at the end of the day it is important to have a peaceful 6 hours of sleep throughout the day. Trust me, this is very essential. You are just experiencing being an aspirant. I have been an aspirant. I'm studying here for almost 3 years and I've realized the importance of having a peaceful sleep. What essentially would rejuvenate you from the entire stress cycle is how peaceful your sleep is. So 6 hours minimum. So forget about the fact कि तुम्हारी preparation कैसे चल रही हो. 6 घंटा आराम से नींद लो and trust me, ये follow करोगे and you will see wonderful results in your preparation. So that's it for this video. अभी मेरी class है, I got a rush. उसके पहले please do subscribe कर दो यार please. So that's it and yes, cameraman Jahan के साथ I'm signing off.